Jab tak, Khurram, if you can give a brief introduction of yourself. Hello. Yeah. Assalamu alaikum, everybody. So my name is Khurram Adhami. I am the growth expert and blockchain specialist at DAO PropTech. So what DAO PropTech does is it connects real estate developers with the investors, and we are sort of an intermediary platform which manages this transaction between the real estate builder and the investor. So our platform hosts a multitude of features, and we specialize in blockchain as well. So what we are trying to do is, okay, Jawad Nayyar is here as well. Okay, so what we are trying to do here is fractionalize real estate ownership through smart contract. So what happens is the transaction between the real estate developer and the investor is done through blockchain, and the investor gets the fractionalized shares in their wallet. So, Jawad Nayyar has just joined us. Before I get to you, Jawad, Khurram, I have a follow-up question, but not with you, with the audience actually. Since this is a Web3 space, I believe most of the people here know the core concepts of Web3, blockchain, and smart contracts, because that jargon might be used a lot in this talk. If you'd like, we can have a quick 2 or 3 minute review of that, if that helps. Would that help? Yeah, sure. So Khurram, if you can just very briefly explain what a smart contract is, what is blockchain, and then we'll move on from there. Okay. इसको मैं उर्दू में समझा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए. सो डाटा रखने के ना, डाटा स्टोर करने के का एक तरीका है कि आपके पास जो है वो एक अलमारी है और आपने सारा जो सोना है वो उस अलमारी के अंदर रखा हुआ है. अब क्या है कि कोई भी बंदा आके वो उस अलमारी के अंदर अगर घुस गया तो आपके सारी जो वेल्थ है या जितने भी आपके एसेट्स हैं वो सारे कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे. दिस इज़ वन वे ऑफ स्टोरिंग डाटा. एंड देन देयर इज़ एन अदर वे ऑफ स्टोरिंग डाटा. उसके अंदर क्या है कि आपके पास, सो थ्योरेटिकल एग्जांपल है लेकिन लॉजिकली करेक्ट है कि आपके पास मल्टीपल अलमारियाँ हैं और आपने हर अलमारी के अंदर डाटा स्टोर किया हुआ या जो भी आपके एसेट्स हैं उसको स्टोर किया हुआ और सम हाउ इन पैरेलल यूनिवर्स वो सारी अलमारियाँ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. सो जब भी आप किसी एक अलमारी से कोई चीज़ लेंगे, बाकी सब लोगों को पता चल जाएगा कि इस अलमारी से ये एसेट विड्रॉ हुआ है या ये चीज़ निकाली गई है. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल डिस्ट्रीब्यूटेड वे ऑफ स्टोरिंग डाटा. एंड डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो ये आती है कि आप इसी डाटा को एक आप कोरिया के अंदर रख दें, एक आप यूएस के अंदर रख दें, एक आप जर्मनी के अंदर रख दें, तो दिस इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड. एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ के कुछ डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, कुछ डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है और सारा डाटा एक दूसरे से कनेक्टेड है. सो दिस structure, this mechanism of storing data is what a blockchain is. और इसी के ऊपर अगर आप कुछ लॉजिक लगा दें कि अगर इस बंदे के पास ये चाबी हो तो ही इसको ये एसेट देना, this is what a smart contract is. So it's a simple if then condition. Thank you, Khurram. Jawad, I know you, but for the sake of the audience, I'd like you to briefly, introduce yourselves and how the vision of your company, DAO PropTech, came about. Thank you, Burhan. So I'm the Chief Vision Officer at DAO PropTech, and so DAO PropTech is a PropTech 3.0 company, which means that in the PropTech space, we are living in the third wave of revolution. The first wave was basically the information revolution, where information about real estate was made available easily using technology. The second wave was about the transaction revolution, where transactions were made possible using technology, digitally, with a lot of convenience. So we have Zameen, for example, in the PropTech 1.0 wave. PropTech 2.0 ke andar, we don't have a lot of companies in Pakistan. Zillow is an example, for a global example. And so the third wave of PropTech revolution basically aims at providing, so it's called the ownership revolution, which means the bulk of the masses, the bulk of the people are ignored from real estate ownership, and this space will basically make real estate available to the masses. So on average, Pakistan ki average salary ki basis pe agar aap dekhen, to it needs 19 years of your full income to buy an average house.
which means that not a lot of people can. I currently have 10 years of experience, over 10 years. And I don't see myself buying a house within the next 10 years either. Yeah, so basically buying real estate is one of the safest asset classes, income yielding as well, a good way to hedge against inflation, and everyone should have the right to access that. But sadly, we don't. We don't have access to real estate ownership for the masses. And so this revolution, the third revolution of PropTech, aims to provide for those, the ignored 95% or something in our country. And so DAO PropTech is aiming to do that, to be a thought leader in that space and enable the masses to buy real estate and enjoy the gains. And within that space, within the real estate space, there are three distinct markets. One is called the space market, the other one is called the asset market. Space market is about rent, jahan landlords and tenants aapas mein deal karte hain. Asset market is where assets are sold, so plots, flats, commercials, all of these things. And the most lucrative part of the real estate industry is the developmental real estate, where assets are created, where assets are made. So इस space के लिए ये space बहुत ही ज़्यादा exclusive है. It's big boys game. Only a selected few can play that game. Barrier to entry बहुत high है. Legal structure बहुत मुश्किल है. So using technology, we are enabling the masses to invest in developmental real estate and enjoy those returns. And if they want, they can cash out those returns, or if they want, they can convert their returns into physical assets. So, आपने बात करी कि developmental real estate, जब कोई project बन रहा है, कोई भी building, कोई भी चीज़ बन रही है, वो game जो है big boys play करें, there's huge money involved, and your company is actually enabling people to be a part of that. But how is that different from, मैं 10,000 किस्म के ads देख रहा होता हूँ, हमारा ये project है और अभी से invest करें और 4 साल बाद बन जाएगा. Am I not participating in that? How is your company's participation structure different than what I would do with someone else? Right. So if I understand your question correctly, जो fractionalized ownership है, वो Gharana.com ने for the to the best of my memory, Gharana.com ने introduce की पाकिस्तान के अंदर by giving 100 square feet of land, commercial land, to people. But they didn't use the relevant technology. They were handing out stamp papers for that, and that can result in a lot of problems. So you can good companies might not, but obviously when Gharana introduced, a lot of other people started doing it as well, and so these financial products were not qualified, and the total area जो वो बेच रहे थे, there wasn't a ledger, so you cannot verify कि कोई ज़्यादा बेच दे या कोई कम बेच दे, oversell कर दे, and so these assets don't exist and are being sold, and so it can turn into a Ponzi. हम जो हैं उसको using Web3, using the blockchain technology, we have a record of all these assets and the owners on a public ledger, जो सब लोग देख सकते हैं, which is updated, every few seconds. We use the Ethereum blockchain, so it's updated every few seconds. And so that makes it more secure for everyone to use. So that's one part, the PropTech part. And then the DAO part is the vision that communities can come together and create big assets without the help of the big boys. So that is what true ownership revolution would mean from where I see. Ordinary people, a lot of ordinary people with less money can come and challenge the big boys. So, in essence, अगर मैं कहीं और भी किसी भी developmental project में भी कुछ खरीद रहा हूँ, तो it is already accounting for a lot of other stuff, और मुझे already अच्छे खासे profit और premium पे भी वो चीज़ मिल रही है, जो कि DAO के through मुझे एक तो वो नहीं मिल रहा, plus accountability है जिस तरह आपने Web3 और Ethereum blockchain डाल दिया. So अगर आप किसी भी project में कोई चीज़ खरीदते हैं, तो you are being sold a product. You're the customer. In most cases, you are the goat, scapegoat. आपको बेचा जा रहा है वो product, and there is a lot of premium involved. With DAO, you are not being sold that product. You are helping create that product, and once created, you will enjoy the returns that everyone else would. So there is one price for each round for everyone. All the information is publicly available. So आप वो product खरीद नहीं रहे DAO के साथ. You are helping create that product, and when it's done, when it's created, तो फिर आप उसको बेच भी सकते हैं और उसके returns भी enjoy कर सकते हैं. So that's the primary difference.
Khurram, I'd like you to jump in here. How can Web3 technologies, ये blockchain वगैरह, actually enable fractionalized ownership better? Fractionalized ownership की बात तो हो गई, जवाद ने भी बात की कि हम उस पे कर रहे हैं. But what part actually does Web3 play here? Why can I not implement a system like this without the use of, all of this complexities or jargon Web3 वगैरह के? What part is Web3 playing here? ओके सो रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है ना उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी हाई है. मतलब अगर कोई प्लॉट होता है तो आप उसको बता सकते हैं, उसके ऊपर जो जो फार्मूलाज हैं, नेसेसरी फार्मूलाज लगा के आप बता सकते हैं कि इसमें कितना एरिया जो है वो लिवेबल है और कितना जो एरिया है वो ग्रॉस है. तो जब हमें ये चीज़ पता लग गई कि इस बिल्डिंग से या इस प्लॉट से सिर्फ इतना ही एरिया बिक सकता है, सो then we can put that area on a smart contract. So when we put that area on a smart contract, it clearly defines one thing कि अब ये इससे ज़्यादा आ नहीं सकता, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता. फॉर एग्जांपल बिटकॉइन की एग्जांपल है, 21 मिलियन बिटकॉइंस आएंगे एग्जिस्टेंस के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, ये हार्ड कैप है. तो इसी तरीके से हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो टोटल सेलेबल एरिया है उसकी एक हार्ड कैप लगा सकते हैं. फर्स्ट थिंग ये हो गई. दूसरी चीज़ ये हो गई कि अब जो भी बंदा आके ख़रीद रहा है या जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है वो उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जो एरिया है या जो स्क्वायर फीट है वो निकल के उसके वॉलेट के अंदर जा रहे हैं. सो इट्स अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन. अब जो यहाँ पे जो मेन डिफरेंशिएटर है वो है ओनरशिप का, एक सेंस ऑफ ओनरशिप का. इफ़ यू अंडरस्टैंड ब्लॉकचेन इन इट्स ट्रू एसेंस एंड एट इट्स कोर, तो इट्स एन इम्यूटेबल लेजर, इट्स अ वन वे स्ट्रीट. एक दफ़ा जब डाटा चला गया तो वो पीछे नहीं आ सकता. तो एक दफ़ा बंदे ने किसी ने ख़रीद लिया तो अब ऐसा नहीं है कि उसके साथ कोई स्कैम हो जाए या उसका एरिया जो है वो रिवर्स हो जाए या वो बाद में बोले कि यार ये तो कंपनी बंद हो गई, दुकान बंद करके चले गए. तो ऐसा कोई सीन हो नहीं सकता. So yeah, this is the key differentiator. और यहाँ पे एक चीज़ ये भी ऐड करूँगा कि this is the first time in the history of internet कि हम लोग को true ownership मिली है और now we can transact value through the internet. So this is, we haven't completely realized कि ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है और उसी स्टेज के अंदर हैं अभी. कुछ साल लगेंगे इसको ट्रू सेंस ऑफ रेवोल्यूशन और ओनरशिप को समझने के लिए. सो या वी आर ऑन अ अपहिल स्ट्रीट. Sorry, Burhan. So, as all three of us are colleagues, this conversation is pretty superficial. I would really, so Web3 is about communities. Our company is about communities as well. DAOs essentially means creating communities. And so, if any one of you would like to ask any question, this might be more interesting. Please. Yes, please. अच्छा. आप पूछ लें, मैं reiterate कर देता हूँ. So your company is not regulated by any government. So in future, if you gets bankrupt too, so who will decide that which compound or which fraction of a certain plot is? I got it. Yeah. Okay. So I see more than one question here. Who will decide? Straightforward to hai ki the ledger. So there's a ledger. Our company is just maintaining the ledger. And the ledger states ownership of each person. तो अगर कोई भी bankrupt होएगा तो वो ledger decide करेगा कि asset किसका है. Secondly, to mitigate that risk, we don't deal in cash. We just take cash that is required for development. So we don't have cash in our accounts. We only take cash that is required to create the asset. And so the asset is real and it is increasing in value. Okay. So very little chances, doing this way, I believe chances of bankruptcy are minimal. Okay. And even if there is a bankruptcy, so even if there is a bankruptcy को liquidity crunch बोल देते हैं. If there is a liquidity crunch, तो उस केस में भी वो asset जो है वो available है और वो asset बेच के लोगों के पैसे पूरे किए जा सकते हैं. It's a real asset. Finally, जो DAO PropTech है, it's a technology provider. So the money is, so we just enable developers to take this approach and use communities to create the product, their projects.
तो जो पैसे हैं वो डेवलपर के पास जा रहे हैं. So अगर कुछ होएगा भी तो वो डेवलपर को ही होएगा. Okay. We are just a B2B business. We charge the developer for our services. Okay, So अगर डेवलपर कुछ करेगा तो फिर DAO PropTech is here to secure your funds. Okay, so this technology in real estate sector is completely new to me. I'm newbie in this, so I'll ask a stupid question. Let's say if there's a plot, तो उस प्लॉट को एक ही सड़क लगती है, ठीक है, और उसकी आप लोगों ने फ्रैक्शंस बना के थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेब3 के थ्रू आपने उसको सेल कर दिया है, फ्रैक्शंस उसकी थ्रू पब्लिक जिसको भी आपने बेच दी है ऑन योर प्लेटफॉर्म. एक तो ये बात हो गई. अब हु विल डिसाइड कि आपने वो तो बात बता दी है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से उसकी डिवीजन होगी, बट आर यू गाइज एडिंग एन XY एक्सेस ऑन द लैंड के आगे वाला फ्रैक्शन इस बंदे का है, पीछे वाला फ्रैक्शन इस बंदे का है, और इसके अलावा you guys are only investing in that property, right? So to me there's no productivity unless you are not attracting some foreign investment in local Pakistani real estate. तो अगर आप पाकिस्तान में ही एक इकोसिस्टम में ये काम कर रहे हैं तो ये तो पहले भी हो रहा है. Amnesia मुझे भूल जाएगा पिछला क्वेश्चन. Okay, please. So the first question was not stupid at all. So हमने जो है वो we have created a tool called so a conversion matrix and gamified the whole process. What people get are non-demarcated square feet. Okay. And then there is a gamification element involved through which you can demarcate it. Okay. And so all the assets that there are not marked against rupee price, but against non-demarcated price. Okay. So a flat would cost not X amount of million rupees, but X amount of non-demarcated square feet, and all other assets as well. So if you complete those, then there is a shop where you can go and use these non-demarcated square feet to buy the asset. And so through this gamification, we solve this problem of who gets what. That's the first question. What was the second question? The second question was कि आप लोग, are you guys inviting foreign investors in Pakistan? So no, I remember the question. Yeah. So real estate, I agree, is an unproductive asset class. Yes. Because we do it unproductively. Yes. We cut our cities, we cut our jungles and agricultural land, and we just create plots that are not used for 20 years, and we unutilized space, climatic problems, environmental problems, and yeah. So economic multiplier, I understand. Economic multiplier of these बहुत छोटा है, and उसके अंदर से value creation नहीं है, and and that's correct. But real estate, when it goes into development, is not such, because development has a very high multiplier effect. A lot of money is processed through these allied industries, and so there's a very high multiplier effect, resulting in a lot of other industries being created. What we need to do is create productive assets. Housing deficit to hai na. You need office spaces and workspaces and hospitality spaces. So we do need spaces. We cannot go without creating real estate. The solution probably is to come together and create the real estate that we need. Not the real estate that can be sold only, or not the real estate that is required by the top 1 to 5%. But the real estate that is needed for the masses. And for that, we do need masses to contribute, to start contributing and start taking their decision. And so DAO essentially means that, DAO means that you can become owner, you can dream, envision, and together we can create. Thank you, Jawad. Are there any questions? Because we're short on time, we'll only take one. जी, आप question बोल दे, मैं reiterate कर लेता हूँ. खुर्रम को दे दें. So, जैसे बुरहान ने कहा, Khurram, so I'm not a tech guy, Khurram and Burhan, but I see the metaverse as a very dark space. I value human interactions a lot, and communities a lot, and I see the threat of metaverse as a very dark threat to our culture, to our existence, and for that reason we didn't get to speak about it, but we should build
more user-friendly real estate and more inclusive real estate to avoid that threat. Otherwise, the next generations, the next few generations will not interact in person, and that will be a very dark, sad future. So these are my thoughts on it. Baki iski upar technically, he's invested in metaverse, so yehi batayega. But before Khurram speaks, I would like to include my 2 cents as a non-techie primarily. I believe the main mistake we made with metaverse was that we replicated the traditional real estate का model over there. लोगों ने जगह लेनी शुरू कर दी, एक फ्रेंजी में बाय करना शुरू कर दिया, जी यहाँ पे मैं अब अपना ब्रांड का ये खोल लूँगा और ये आ जाएगा वो आ जाएगा, विदाउट रियलाइजिंग द नीड फॉर इट, विदाउट रियलाइजिंग कि कहाँ पे किस तरह होगा, एक भेड़ चाल चल पड़ी और उस हिसाब से हो गया और आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन हो गई, प्राइसेस एकदम इन्फ्लेट कर गई, बलून कर गई, उसके बाद वो बर्स्ट कर गया. सो इसको शायद कोई डिफरेंट अप्रोच चाहिए इस चीज़ को देखने के लिए. खुरम, इफ यू कैन डू इट क्विकली, वी ओनली हैव 2 minutes. Just 1 minute probably. ओके सो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि अभी जो मेटावर्स के जो आपने वर्चुअल लैंड्स का चीज़ें बोली हैं, ये इट्स कम्प्लीट स्पेकुलेशन. अभी यू डोंट नो कि विच मेटावर्स इज़ गोइंग टू विन. सैंडबॉक्स है, वॉक्सेल्स, क्रिप्टो वॉक्सेल्स हैं, डिसेंट्रलैंड है, और यहाँ पे भी अभी इससे पहले वाले सेशन में वो भी मेटावर्स बना रहे थे. तो अभी जो चीज़ चल रही है वो मेटावर्स के नाम को कैश करवा रहे हैं. तो यू नेवर नो कि विच मेटावर्स इज़ गोइंग टू विन, बट देयर आर सम बेसिक प्रिंसिपल्स जिसके ऊपर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विनर कौन है. 1998 का जो .com बर्स था, उसके अंदर cats.com, pets.com, यू नेम इट, वो कौन से वैन थे, वो सारे जो है दे कोलैप्स्ड बिकॉज दे वर नॉट बेस्ड ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स या फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग के ऊपर नहीं बने हुए थे. बट अमेजोन सर्वाइव्ड, और ये सारे जो जाइंट्स, सोशल मीडिया जाइंट्स हमें दिखते हैं, ये दे आर द सर्वाइवर्स ऑफ दैट क्रैश. तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं मेटावर्स के, वो सबसे फोरमोस्ट पे है कम्युनिटी. एक चीज़ कहलाती है UGC, यूज़र जनरेटेड कंटेंट. तो ये सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स यूज़र जनरेटेड कंटेंट ही हैं कि आप कंटेंट क्रिएट करते हो एंड दे आर जस्ट गिविंग यू अ प्लेटफॉर्म वेयर अदर पीपल कैन सी योर कंटेंट. तो मेटावर्स के अंदर एक बंदे के पास प्लॉट है, उसने एक फॉर एग्जांपल कोई हॉट व्हील्स की राइड बना दी, and now people are going to I'm sorry to say we're running out of time. We have other speakers as well. Okay. I'm really sorry. That was an amazing discussion on real estate and the role of Web 3.0 in improving it. Thank you. Thank you. Thank you.